Shoguna Sari Savarna Jacharya Sare Mahakari Satguru Pyarya Bhakta Shoguna Sari Savarna Jacharya Suniyo Acharya Padiye Dilli Parivar hai Thodi Muni yaad hai ji Thodi Muni yaad hai Dukha wali kari bande rakhne yaad hai Thodi Muni yaad hai ji Thodi Muni yaad. Thank you. तुलसी साहेब जी का एक शिष्य जिसकी रूह धीरे धीरे अंदर जाने लगी। एक बार वो घर में हमेशा 2.5-3 घंटे की बैठक बनाता था। एक दिन उसकी रूह अंदर गई और एकदम लाइट दिखाई दिया, चमक, बिजली के चमक जैसा, तो उसको सहन नहीं हुआ, तो वो नीचे गिर गया और छटपटाने लगा। Once Tulsi Sahib's disciple, he used to meditate and he was slowly going within. So once when he was sitting for meditation for nearly 2.5 hours, he suddenly like lightning and brightness inside, and he could not withstand that brightness. So he fell down from his meditation. अब वो छटपटाने से आवाज आया, औरत भाग के गई, देखा तो उसने, अब औरत को क्या पता है कि ध्यान में ऐसा होता है, तो उसने सोचा कोई भूत भीत आके पकड़ लिया और अगल बगल वाले को बुला के लेके आई। So he started trembling, and with that experience, he fell down and he started trembling. With that, there was a noise because of that, and his wife came to see what happened. Now she was not aware that in these experiences something like this can happen. So she felt that some ghost or something he has been taken over by a ghost or something. तो बाद में गांव वाले बोले जल्दी जाओ मुल्ला को बुला के लेके आओ, इसको भूत पकड़ लिया। So she ran to the mullah and asked him to get somebody who can help him, and he said that there is a ghost that is upon him. तो बच्चे गाड़ी पे मुल्ला को बिठा के लेके आए, बोला हाँ इसको भूत ही पकड़ा है, तो बाद में वो मंत्र तंत्र करने लगा और मोर के पंखे से ऐसा उसको मारता था, और तो थोड़ा ऐसा वो चला आधा घंटा। उसकी रूह जब नीचे उतरी तो वो देखता है इतना भीड़ भाड़ मेरे कमरे में कहाँ से आ गया। तो बोलता है क्या हो गया, औरत से बोलता है, बोलता अरे तुम्हारे भूत पकड़ा था ना, अभी मुल्ला जी ने निकाला, भूत को हटाया। So that way, then the mullah got a few people, and they got those peacock feathers and all that, and they started doing all these different rituals to get the ghost out. And then after about half an hour, when he came back to his normal senses, he woke up, and then he saw suddenly there is such a big crowd in his room. So he was shocked to see, and then his wife told him that there was a ghost that had taken you over, and now with the help of the mullah, we got that ghost out. तो वो कहता है अरे तूने क्या किया, तेरे को इतना भी पता नहीं। तब से वो फिर दरवाजा बंद करके बैठने लगा।
So then he told her that you don't know anything. So after that, while meditating, he used to lock his door. क्योंकि अपने सत्संग घर में भी बॉम्बे वर्ली में भी दो आदमी ऐसे गिर जाते थे, आर सिंह और भुवनेश्वर। तो जब ऐसा चमक और सहन नहीं होता है तो गिर जाते एकदम झटका लग के। तो वो हमेशा गिरते थे हमारे वर्ली नाका इसमें। हाँ, तो गिर जाते थे तो लोगों को मालूम हो गया धीरे धीरे कि इनको सहन नहीं होता, गिर पड़ते हैं। लेकिन वो वहां पे क्या है, गांव वाले लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो अनजान है, तो वो कुछ और ही समझ लेते हैं। So even in the Varli satsang, there were a couple of satsangis who used to fall like this. There was R.R. Singh ji and भुवनेश्वर। Bhuleshwar. They used to also fall like this in the meditation. Sometimes it happens when one cannot withstand that brightness inside, then they fall behind, and then slowly, of course, the other satsangis came. They were aware that this such a thing happens, and they used to not bother them. But then in the villages and all, people don't know this. तो इसीलिए और नामधारी के पास भूत प्रेत कहाँ आएंगे, लेकिन ये उनका गलत, वो बेचारी अनसमझ थी, इसलिए उसने ऐसा समझ लिया। नहीं तो भूत प्रेत रहने के जगह में भी अगर हम भजन बैठते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है, ऐसी मलिन आत्माएं जगह छोड़ के चली जाती। So there is no question of any ghost or anything like that coming to anywhere near a satsangi. In fact, if there are ghosts somewhere and a satsangi goes there, those ghosts will leave that place. So, but that person's wife did not know about all this, so she was scared because of that. तो ऐसे ही मैं, जब महाराज जी ने हुक्म दिया सत्संग करने का, अजय सिंह महाराज, बहुत पहले की बात है, और मैं आंध्रा में सत्संग शुरू किया, तो मेलकुंटा गांव है, मेलकुंटा हमारे लोग जानते हैं। तो वो हमारे पार्टी के बड़े भाई साहब थे, तो उनकी औरत को बहुत दिन से भूत पकड़ा हुआ था, और शादी होके काफी दिन हो गए, कोई बाल बच्चा भी नहीं। तो वो क्या करती थी, वो बेचारा परेशान था, वो भूत उसको अपने साथ लेना चाहता है, तो रात को उठ के भागा करती थी बावड़ी में गिरने के लिए। खेती में बावड़ी होती है ना, बड़ी बड़ी, उसमें गिर के मरने के लिए। तो वो क्या करता, बेचारा परेशान होता, पकड़ के लाता था। कभी रात को नींद में रह गया तो भाग जाती थी, इसलिए वो पैर में बांध के सोता था रस्सी से, औरत का पैर। So this has happened long back when Sanji told me to go in Andhra and do the satsangs. Then this was quite long back. There's a village called Melkunta, and the party's elder brother, his wife, she was there was a ghost that was troubling her, and in the night she would keep running towards the well. There are these wells in the farmlands, so she would in her sleep then she would get up and then run towards the well, because that ghost was uh, trying to kill her and take her towards take make her a ghost. So she would keep running like that, and this her poor husband was very scared of this, and he used to then hold her whenever she would go like that, or in his sleep also she would probably get up and run like that. So he used to tie her feet with a rope so that she doesn't go like this. तो बाद में मैं गया वो गांव में, और महाराज बॉम्बे का प्रोग्राम जनवरी का था, अजय सिंह महाराज जनवरी में आने वाले थे, तो 97 की बात है। तो मैंने लोगों से कहा अगर कोई नामदान के लिए आता है, मैंने सत्संग में बताया था कि घर में भूत प्रेत रहे तो नाम सुमरन करने से जगह पवित्र होती है, वो चला जाता है। तो वो परेशान था करीब 8-9 साल से,
तो वो लोग तैयार हो गए सब, करीब 10-12 लोग तैयार हो गए और वहाँ जनवरी में बाबा जी से नाम लेने के लिए, अजय सिंह महाराज जी से। तो मैंने सबका लिस्ट बनाया। तो मैंने जैसे ही उसका नाम लिस्ट में रखा, वो औरत का और उस पति पत्नी का, वैसे उसका बोझ छोड़ दिया उसको और तब से वो ठीक हो गई, उसके पास भूत ही नहीं आया। So this was around 1997. Now I used to do satsangs there, and I had already informed people in the satsangs that whenever there are satsangis or you take initiation, there is no question of any ghost or a person being possessed by a ghost or even the ghost being nearby. All the ghosts leave from that area. So they were all aware of this. So when I told them that okay, I'm going to go to Sanji, so we were preparing a list for the new initiates, and then all of their family agreed to take initiation, and even this lady agreed. And the time I put her name in that list, she whatever she was possessed by this ghost, that ghost left her, and after that she was never affected like this. तो बाद में मैं ले जाके बॉम्बे में अजय सिंह महाराज जी के पास नाम दिलाया और नाम दिलाने के बाद वो घर पे आई, फिर कभी उसका ऐसी हालत नहीं हुई और उसको 4 लड़कियां हुई। So that then she came to Mumbai and she took initiation from Sanji, and after that that ghost never disturbed her, and she had 4 daughters after that. तो ऐसे बहुत वाकया होते थे, हमें पता भी नहीं होता। वो लोग जानबूझ के वहां ले जाके हमको वो घर में रहने के लिए और कुछ नाश्ता वास्ता देते थे। फिर वहां से अगर कोई मलिन आत्मा रहती थी वो चली जाती थी। तो कहते हैं कि इस तरह से सत्संगियों को डरना नहीं चाहिए। जहाँ नाम का सुमरन होता है वहाँ कोई भी मलिन आत्मा नहीं आ सकती, अगर है भी तो जगह छोड़ के चली जाती। So that way, whenever satsangis go to the houses where there are ghosts, then those ghosts leave those houses. People used to call me to their houses for some snacks or some reason or the other, and if there was any ghost that possessed that house or any person in that household, he would leave immediately. So such things keep happening. But if one is initiated and uh, uh, satsangi who practices, for them there is no question of any ghosts or anyone coming near. तो इसीलिए एक सत्संगी जब नाम लेता है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। जो धर्मराज के डिपार्ट में उसके कर्मों का लेखा होता है वो गुरु के डिपार्ट में आ जाता है। तो उस दिन से लेखा धर्मराज के डिपार्ट में नहीं तो देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं। Once a person takes initiation, then the account of karmas with the Lord of Judgment and the effect of all the gods and goddesses, that ceases, because that account moves to his master. Then it is the master who takes care of all the deeds of that person. तो कहते इस तरह से जब देवी देवताओं से मतलब नहीं तो शास्त्र पुराण का कोई हिसाब नहीं। तो एक सत्संगी को शास्त्र पुराण का कोई असर नहीं होता है। हमें उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कभी कोई समय पे भी घर बना सकते हैं और कोई समय पे भी शादी का मुहूर्त रख सकते हैं। So, if there are no gods and goddesses that are affecting the person, and the account is with the master, then there is no question of any effect of any astrology or any other science, any other effect of anything that is written in any scriptures. So, if one is a satsangi and an initiate, he should not bother about proper time as per astrology and proper vastu and any other thing like that. All these things written in the scriptures don't affect them. कहते हमें अपने ध्यान से सब सारी बातें निकाल देना चाहिए। ये सब का डर निकाल के भजन सुमरन करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमारा लेखा जोखा गुरु के हाथ में होता है।
So, be it a marriage or be it a housewarming or anything like that, we should not worry about all the dates and all the other auspicious and inauspicious aspects. Satsangi should not bother about all this, and he should not be scared about all these various things that are written in the scriptures. So he should simply focus on doing his bhajan and simran. Whatever he does when he's doing his simran is auspicious. हमने हमने जब से भी बाबा जी का 73 में मैंने सत्संग सुना, 1973 में वर्लिना का। जब से मैंने सत्संग सुना तब से मैं शास्त्र पुराण का राजीनामा दे दिया और एक गुरु को सब कुछ माना, और तब से फिर आज तक मैंने कभी शास्त्र पुराण के ऊपर विश्वास नहीं किया। In 1973, after I heard the satsang for the first time, I gave a resignation to all kinds of shastras, puranas, and all of those rituals. And I've just been in the Santmat, just following the Santmat. So all that is over for me from 1973. मैंने ऐसे ही जितने भी आश्रम बनाए हैं बगैर कोई शास्त्र पुराण, बगैर किसी के पूछे हुए अपने हिसाब से बनाए हैं, जबकि वही शास्त्र वाले आके पहला आश्रम बनाया था, नाम रखे थे, लेकिन वही आश्रम है आज कहाँ से कहाँ चला गया। तो क्यों कि दुनियादार को उसका असर पड़ता है, लेकिन एक सत्संगी के लिए उसका कोई हिसाब नहीं। So I have not bothered about all those auspicious dates and vastus and anything like that that is written in the various scriptures and Puranas and Shastras. I have constructed so many ashrams, and we have never looked for these kind of dates. We have or this kind of positioning of the ashram, etc. All of that we have done according to how we thought it feasible, and we constructed. And though people came and they advised against it, many people came and advised that these were not built according to the correct vastu, etc. But then we didn't bother, because for a satsangi all this is irrelevant. He is not within the realm, though it affects worldly people because they are under the effect of gods and goddesses, but for a satsangi all this is irrelevant. इसीलिए धर्मराज के पास लेखा नहीं होने से यमदूत नहीं आते और गुरु को ही लास्ट टाइम में शरीर छोड़ने के समय आना पड़ता है। That is why at the time of death, the satsangi, the soul of the satsangi, the Lord of Judgment does not come to take the soul of the satsangi, because he is outside of his account is with his master, and therefore the master himself has to come at the time of death. तो इसीलिए चाहिए हमें इन सब भ्रमों से ऊपर उठ के गुरु के ऊपर भरोसा रखें और भजन सुमरन से जुड़े रहें। Therefore, we should rise above all these things, and we should stay connected with the meditation given by our master and stay connected with the master. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, आंख बंद करके सुमरन भजन से जुड़े। The time is good, and let us make the most of it. Let us close our eyes and get connected with Simran and Bhajan.